Hello everybody, welcome back to the DAS. I'm Divinity Bisht, and in today's class I will be teaching you the hook step of Sira by Guru Randhawa and Kiran Bajwa. So just to let you know, the hook step is designed by Yash Kadam, and that is why it is very easy to learn and super fun also. It has a lot of grooves, and all those click movements, so it's gonna be really fun. So without wasting any time, let's just dive into the tutorial. But before that, here's a preview of what we are going to learn today. Alright guys, so I hope you are done with the preview. So now let's start the tutorial. So for the first step, we have to face our right side. Okay, मैं अपने right foot पर पूरा बैठूंगी and my left leg will be on the toes only. Okay, so it will look like something like this. And from here, I will place my left leg parallel to the right to front, like to face the front. Okay, so it will look like ha. Okay, and from here, my left hand, it will be on the waist. ऐसा, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे होगा. Okay, fingers will be facing the back. Okay, so I am here and I will go 5, 6, 7, go ha, like this. ठीक है, and यहाँ से I will, tilt my head like ha. Okay, so my head, my forehead, my head is going towards the left side and my chin is going towards the right side. So it's like ha. Okay. So on lyrics, it looks like 5, 6, 7, go. हर दिन द मसला. Okay. अभी यहाँ से I'm going to bend forward. Okay. ऐसा. मेरी जो right leg है, it's gonna go in and in. Yes, I will be bending a little on my left leg. ठीक है. हल्का सा I will bend. And मेरी जो right leg है ना, उसका जो knee है, जो right knee है मेरा, it will firstly go in and out and then in. ठीक है, so I go 1, 2, 3 and 4. ऐसा है. And इसके साथ I will put my right thumb out and I will slowly trace the corner of my lips. ऐसा. So it will look like 1, 2. Okay, now I'm here. I'm freezed here. अभी यहाँ से क्या है? I will move in the left diagonal. How? I will ऐसा है कि I will kick my right leg. Ha! ठीक है? Like imagine a football is placed in front of my legs and I just have to kick it. And I'll place here. Okay? So it will look like I ended up here. 1, 2. I will go 1, 2. ठीक है? अभी एक बार stop से करते हैं हम लोग revise. We go 5, 6, 7, go. हर दिन द मसला चक के असला पंगे क्यों पौने. ओके, सो इतना आपको आया. अभी यहाँ से ना, when I did this and the moment I kicked my leg and I'm placing it now, my upper body is gonna rotate towards the back left diagonal. ठीक है? So it will be of a very slight second. It will look like tuck tuck, just a tuck tuck. Okay, so when I am facing the back, my hands are down only. But when I'm facing the front again, right, my hands will come in a cross right in front of my chest. ठीक है? ऐसा. So it will look like we did 1, 2. Now from here we will go kick, place, ha. ठीक है? So it will look like हर दिन द मसला चक के असला पंगे क्यों पौने हो. Okay, now from here I will rotate my waist for 2 counts. ठीक है? कैसे घूमेगा ये? Right to left. ठीक है? Not from left to right. It will go right to left. So it will look like पंगे क्यों पौने हो, पंगे क्यों पौने हो. Cool. 2 बार हमने waist movement करी. Now from here the hook step begins. Congratulations. From here we will be going 1, 2. Yes, हम लोग यहाँ इस position पे हैं. We are already facing the left side. Our right leg is placed in front of us. Now from here we will be placing our left leg out.
And now from here we are gonna face the right diagonal by placing our right leg in the right diagonal. ठीक है? It is very slow. We just have to take 2 steps. We did rotate, rotate. Now we go 1, 2. Yes. अभी वो जो एक हल्का सा ना एक बाउंस एलिमेंट आता है, वो कैसा है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. When we ended up here, from here we will be हम अपने ना दोनों हाथों को ऐसे, it will be moving above our heads. 1 and from here हैंड मूवमेंट्स कंटिन्यूएशन में है. ठीक है, यहाँ से हेड को सर पास कर कर गए, अभी यहाँ से चेस्ट को ट्रेस करेंगे. कूल, आई होप दैट मेक सेंस बिकॉज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. तुसी जिथे भी जानने हो. कूल. सो हैंड्स आप देख सकते हो, they are first going above my head, then from here only they are going straight to the chest and down till the waist or abdomen. Okay, so when we ended up here we go 1, 2. Cool. अभी इसमें ना हमें हल्का सा बाउंस एलिमेंट ऐड करना है, एंड आई थिंक ये बाउंस एलिमेंट की वजह से ये स्टेप बहुत यूनिक लगता है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, and it's very fun to do so as well. So we did waist movements. Now we go 5, 6, 7. Go 1, 2, 3, 4. Cool. हल्का हल्का बाउंस करते रहेंगे हम. स्टेप्स हम 2 ही लेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, स्टेप्स हम 2 लेंगे. इट्स जस्ट वी हैव टू बाउंस 2 sides each. ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, सो वी डिड दिस. नाउ फ्रॉम हियर वी गो 1, 2. अभी यहाँ से आई एम गोइंग टू place my left leg slightly more outside to come in a squat. Okay, now my left hand will be dropped. ठीक है, my upper body is slightly not this, slightly tilted towards the left. ठीक है, and my neck is also slightly facing the diagonal, left diagonal. Okay, left side is dominating in this step. This is the main hook step. Okay, so we ended up here. From here left is opening, hand is free, neck is fully tilted towards the left, and we go 1, 2, 3. For 3 counts we are going to bounce our chest in. Okay, we are going to do 3 chest pops, in, not out, in. Okay, so we go in, and इसी के साथ now we are going to place our right hand above our chest, and we are ऐसा हम show करेंगे that we are suppressing our chest from our right hand. ठीक है, so combining all these elements, how it's gonna look, we ended up here, right? Now from here we go 5, 6, 7. Go 1, 2, 3 and 4. Cool. अभी यहाँ से I'm going to place my left leg towards the right, and I face my right side. My left hand will be on the waist, ऐसा. ठीक है, and my right hand is dropped. ठीक है, now from here अब आता है hook step. अब see, my left knee is bended. ठीक है, ऐसा है, my left knee is bended but my right leg is straight. So that makes me sit on my right leg fully. ठीक है, मेरी waist, I'm sorry for that. So मेरी जो waist है, it will be slightly towards the right. Okay. So when I end up here, from here, I will do 4 movements. Hip की, and उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है. Alternately मेरे knees bend हो रहे हैं. अभी क्या है, मेरी left knee bended है, right? तो यहाँ से I am gonna make it straight and I'm gonna bend my right knee. Then I'm gonna do the alternate, then I'm gonna do the alternate, then I'm gonna do the alternate. So it ultimately gives me this movement. 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4. है ना? Make sense? So when I ended up here, अभी यहाँ से ठक 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 ये मूवमेंट जा रही है वेस्ट की. ठीक है, it goes left right. अभी हैंड मूवमेंट क्या है, यहाँ से I'm gonna make a fist. ठीक है, I'm gonna make a fist. अभी जो fist है, it is going to place on the left side of my waist, then on the right side of my waist, then on the left
अभी खुल जाएगी, फिस्ट खुल जाएगी और इससे ऐसा एक ऐसा हाफ फ्लावर बनाएंगे हम, ओके, एंड इट्स गोना प्लेस इन फ्रंट ऑफ माय लेफ्ट shoulder, then on the right shoulder. So it goes 1, 2, 3, 4. Cool. I hope that makes sense. And मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि when I come here, मेरी neck भी right side face कर रही है ना? But the moment I do this, है ना? With the moment I do this, मेरी जो neck है वो भी front face करेगी. Okay? So it will look like 5, 6, 7. Go 1, 2, 3, 4. I think it's 8 times. Okay, एक बार हम रिवाइज करते हैं यहाँ से. We go 5, 6, 7 go. तुसी जिथे भी जाने हो सिरा कराने हो, दसो की चाहने हो, दसो की चाहने हो. Yes, it's 8 times. I'm sorry guys, मेरी पंजाबी बहुत गंदी है, so please excuse me for my bad singing skills. ठीक है, I'm really sorry for that. Okay, so it's 8 times, not 4, 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And इसके साथ ना you can do any free neck movement as you can, ठीक है? And इसके बाद ना ये repeat है. From where? From here. Tuck, tuck, tuck. Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this whole set is 2 times. Okay? So the hook step is complete. Congratulations guys. Now that the hook step tutorial is complete, firstly we are going to do this on slow counts, okay, on slow counts. So we are going to start from our right side. We go 5, 6, 7, go 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and then 8. We go 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. Cool. अभी स्लो काउंट्स पे हमने किया, अब हम करेंगे मीडियम, हल्का सा पेस बढ़ाएंगे. लेट्स गो. हम यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमें लेग निकालनी है बाहर, राइट? 5, 6, 7 go 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then 8. We go 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and then 8. Cool. I hope that makes sense. अभी हम करेंगे टेम्पो पर. What is tempo? The actual speed of the music. Alright, so let's begin. It's gonna be slightly faster, right? So let's go. 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cool. I like it. तो अभी now that we are done with slow, medium, tempo, now let's jump on the music. But firstly, एक बार आप मुझे देखो, observe करो, ठीक है? जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है उस पर क्लैरिटी देखो कि अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं. कूल. एंड अगर फिर भी कुछ रहता है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, go back to the video, to that specific part, learn it completely अच्छे से, then come back. I hope you're back. So let's try this on music once. कदों मैं किथों दी टिकट कटाला, किसे नू नखरोनी पिंकी नहीं कोई. हर दिन दा मसला चक के असला, पंगे क्यों पाउने हो, पंगे क्यों पाउने हो. जिथे भी जाने हो सेरा करने हो, दसो की चाहने हो, दसो की चाहने हो. जिथे भी जाने हो सेरा करने हो, दसो की चाहने हो, दसो की चाहने हो. ओलीरे अलविदा बकिया करारी न करो, ये तो साडी हुंदी सरदा. So you, I hope आपने देखा, आपने समझा कि कैसे क्या करना है, क्या सब चीज़ें हैं. So let's do it together now. Okay, let's do this together on music. मुंडा पावे माथे तो बलंग खरे गोरी, जट पीछे पागल नी बंबे दी करीमा. गन्ना ते खारां दी गिनती नहीं कोई, किन्नियां फैली नी मिलती नहीं कोई. कदों मैं किथों दी टिकट कटाला, किसे नू नखरोनी पिंकी नहीं कोई. हर दिन दा मसला चक के असला, पंगे क्यों पाउने हो, पंगे क्यों पाउने हो. जिथे भी जाने हो सेरा करने हो, दसो की चाहने हो, दसो
ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ So now we are done with the tutorial. You guys got enough chances to practice, right? हमने music पे भी किया, हमने counts पे भी अच्छे से किया. But still, if you feel like that you want to practice it, again, so here's the practice video. ਤੈਨੂੰ ਨਖਰੋਣੀ ਭਿਣਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸਲਾ ਪੰਗੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੰਗੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੀੜੇ ਅਲਵੀ ਦੇ ਪੱਕੀ ਹਗਰ Alright guys, so that was all for today's class. I will be back with another choreography hook step tutorials really soon. Till then, stay safe, take care, and don't forget to check out more content of Daz on the Daz app only. Okay, I will see you really soon. Bye bye.